Hello, everyone. I welcome you all to the Salesforce CPQ Masterclass by Gradix Academy. In this CPQ Masterclass, we are actually learning about CPQ and we will be having everything around the CPQ. What are the things we are planning to cover into Masterclass? First of all, we'll start discussion about Salesforce CPQ. What is Salesforce CPQ? Why CPQ is important for the businesses? How does CPQ fit into the Salesforce ecosystem? We will be discussing features of CPQ and use cases of CPQ. Then coming to the job requirements in CPQ, current market trends, the competition in the CPQ, why it is booming right now, and why you should go for CPQ at this moment to make your career best in the Salesforce. Then we will be having a look into a syllabus of the Salesforce CPQ. And at the end of the session, we will be having a Q&A, right? So you will get all the understanding about CPQ and how you can just get a roadmap or career roadmap about the CPQ. Okay, so this is all about the agenda of the today's masterclass. Now, let me just introduce myself, guys. My name is Shubham Shindre. I am the co-founder of Gradix Academy, and I have nearly 7+ years experience in the Salesforce domain. And currently, I'm serving for the company called NVIDIA, and I have nearly experience working with multiple companies. And currently, means coming to my experience. I have corporate training experience as well as I have a working experience, right? So coming talking about the corporate training experience, I have delivered the lectures or I have delivered the corporate training in companies like Zensar, Accenture, Cognizant, Hexaware, Globant, and Tech Mahindra. And I am also responsible for every training happens in the Gradix. So I am the lead mentor in the Gradix about Salesforce ecosystem, right? So this is all about me. Let me just tell you more about the Gradix Academy. Gradix Academy is actually a edtech platform or edtech institute belonging to the Salesforce. We only have the courses around the Salesforce. We have niche courses like Marketing Cloud, CPQ, Salesforce Development, LWC, then Finance Cloud, etc., etc. Right? We also have a training around the Salesforce Business Analyst, and we have DevOps, Salesforce DevOps trainings also. Right? We are into a market since 2015. Right? We have offices in 3 cities. We have our main office headquartered in Pune, right, where we offer the offline courses also, right? So you can attend offline batches there. More than 3,000 plus active learners are learning from the Gradix Academy, and we believe in the industry relevant training only. That means all the mentors or all the faculties which are supporting you or which are contributing towards your career, right, they belong to the industry. They are not counselors, or they are not just tutors, right? They real time work into industry so that you could get direct highlight about what are the current trends and what how industry is evolving directly from the working professional. So our motto is to industry relevant training, and we believe in just delivering the quality training, right, by the help of industry experts only, right? More than 150 plus companies are hiring from the Gradix Academy on daily basis, and we have hiring partners also, as we are into a Salesforce, right? We are only into a Salesforce, right? So people or companies hire mostly from the Gradix for the Salesforce resources, right? Our expert is only Salesforce, right? And we are also official Salesforce consulting partner. So all the insights from the Salesforce also directly got out to the Gradix of on the first hand basis. Okay, so this is about the Gradix Academy, guys, right? Now before moving ahead, right,
I would like to tell you this training is totally industry relevant training, and you had to understand the Salesforce, or you had to understand the Salesforce administration, right? Before opting out for the CPQ course, right? Means if you don't know the admin concept or anything in the Salesforce, this course is not for you, right? You first have to understand the Salesforce platform, Salesforce administration or customization, right? And then this is the advanced part of the Salesforce. Okay, right? So let's start with the masterclass, right? So first of all, right, we will discuss about the CPQ, guys. What is CPQ? CPQ क्या है, right? CPQ क्या है, right? First of all, right, this particular master classes, right? In this master class, language is not a barrier. तुम्हाला कुठल्याही लँग्वेज मध्ये तुम्ही मला क्वेश्चन विचारू शकता, आप कोई भी लँग्वेज में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो. दिस इज द इंटरॅक्टिव्ह ट्रेनिंग, राइट? And means we are not keeping a language restrictions, right? Unless and until I know your language, right? So I know Marathi, I know Hindi, I know English. You can ask, you can use these three languages to ask the question. I'll try to answer in your language also, right? So this is all about the trainings, right? Now, talking about the Salesforce CPQ. CPQ बद्दल आपण डिस्कस करू आता. What is CPQ? CPQ is actually configure price quote. मतलब configure price quote, right? Actually, it is a company, right? There was a company called Steel Brick, right? CPQ, which is built on the Salesforce platform. मतलब उन्होंने एक ऐप पैकेज बनाया था. वो ऐप पैकेज Salesforce ने एक्वायर्ड करके उसको रीब्रांड किया एज अ Salesforce CPQ क्लाउड. ओके. कॉन्फ़िगर प्राइस कोट मतलब क्या? कॉन्फ़िगर प्राइस कोट मतलब, राइट, इंडस्ट्री में बहुत बार, राइट, बहुत बार जब भी डीलिंग होती है तब कोटेशंस दिए जाते हैं. मतलब लेट्स अंडरस्टैंड सीपीक्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अप्रोच. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोट मतलब क्या? कोट इज अ कोटेशन, राइट, जहां पे एक फाइनल, राइट, फाइनल डील जो होने वाली है, राइट, उसमें फाइनल प्राइसिंग या डिस्काउंटिंग क्या रहेगा, राइट, वो डिफाइन रहता है, राइट. कोट इज अ कोटेशन, राइट. व्हाट इज प्राइस कोट? About the product or service pricing, right? Now, configuring a price quote for the company, right, comes into a certain module. We call it as a Salesforce CPQ. Actually क्या होता है कि इंडस्ट्री में मल्टीपल कंपनीज वर्क करती है, मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स है. लाइक फॉर एग्जांपल, कंसिडर वी आर वर्किंग फॉर द इंटीरियर डिजाइन फर्म, राइट? अभी इंटीरियर डिजाइन फर्म के लिए हम लोग काम कर रहे हैं to give the code to the customer, right? इंटीरियर डिजाइनर का कोड कस्टमर को देना is hectic task. मतलब code will change depending on the requirement of the customer. Each customer have the unique requirement. Code will change depending on the material user is using. Code will change with the size and scale, etc, etc. तो actually, right, इंटीरियर डिजाइनर को कोड देना या फिर इंटीरियर डिजाइनर को कोड देने के लिए एक एक्सपर्ट पर्सन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? मतलब इफ वी आर वर्किंग फॉर द इंटीरियर डिजाइनर फर्म, और इंटीरियर डिजाइनर फर्म अगर किसी को कोड दे रहा है तो वो एक्सपर्ट गाइडलाइंस चूज करके देगा. मतलब वो देखेगा, राइट, देयर विल बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वही कोड दे सकता है उसका, राइट? बिकॉज वी कैनॉट आइडेंटिफाई द फाइनेंसेस. मतलब कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव, राइट, उठा के कोड नहीं देगा, राइट? देयर विल बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, राइट? सो एक्चुअली दैट पर्सन हैज अ लिमिट, राइट? एक्चुअली सेल्सफोर्स सीपीक्यू ने क्या किया है, वो जो पर्सन जो कोड कैलकुलेट कर सकता है अच्छे से, राइट, उसे रिप्लेस किया है. मतलब CPQ is a module who can identify the requirement, who can automate the code process, any complex code process for the Salesforce. अभी इंटीरियर डिजाइनर, फॉर एग्जांपल, एक बड़ी इंटीरियर डिजाइन फर्म है. उस बड़ी इंटीरियर डिजाइन फर्म में, राइट, लेट्स से रोज के हंड्रेड्स ऑफ इंक्वायरीज आ रही है और हंड्रेड्स ऑफ इंक्वायरीज को कोड देना है, राइट? वो एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई करना रिक्वायरमेंट, रेक्टिफाई करना सब चीजें, राइट, एंड देन कोड देना, इसमें बहुत टाइम चले जाएगा. एंड इफ द कोड इज डिलेड, मतलब कोड डिले हो रहा है, तो उससे डीलिंग के लॉसेस भी हो सकते हैं. तो उस वजह से ही, राइट, हमने क्या किया है, हमने
कॉन्फ़िगर प्राइस कोड ये मॉड्यूल सेल्सफोर्स ने बना के दिया है हमें, राइट, where we can use configuration, we can use the configuration of the price code to the customer, right? उसे हम लोग बोलते हैं Salesforce CPQ. Very simple, right? It is a part or it is an extension of the Sales Cloud, right? Sales Cloud का extension है ये, right? Now understand one more example we can have, right? Consider, right, we are working for the, let's say, mechanical parts company, right? एक मैकेनिकल पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? अभी मैकेनिकल पार्ट्स जिस तरह मतलब अभी मैकेनिकल पार्ट्स बनाने वाली कंपनी जो है, राइट, उसको मल्टीपल कंपनी से अप्रोच होगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के लिए। वो पार्ट्स कभी भी सेम नहीं रहेंगे, राइट? बट थिंग इज व्हाट, जो मटेरियल से पार्ट बन रहा है वो सेम है, राइट? According to the requirement of the customer, for each customer there will not be a same pricing, मतलब हर एक कस्टमर का प्राइसिंग सेम नहीं होगा। प्राइसिंग विल चेंज ऑन द ऑर्डर वॉल्यूम, प्राइसिंग विल चेंज ऑन द कॉन्फ़िगरेशन what we can say, a complex configuration of the job, etc., right? So to identify the requirement and analyze it, right, it will take lots of time to understand, plus it will take an expert personality। मतलब जो जो भी रिक्वायरमेंट गैदर करेगा और कोड देगा उसमें टाइम भी लगेगा और एक्सपर्टीज भी लगेंगी, राइट? बट वी डोंट हैव अ टाइम, राइट? टाइम अगर ज्यादा टाइम लिया तो वो दूसरे कंपनी के पास चले जाएंगे। सो Salesforce CPQ इज द सोल्यूशन फॉर दैट, राइट? सिंपल है, राइट? एक ऐसा मॉड्यूल जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्राइस कोड कर रहा है एक कंपनी के लिए, राइट, ऑन द कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट बेसिस, ओके, उसे हम लोग CPQ बोलते हैं, राइट? सिंपल है। सॉरी। नाउ जो CPQ है, राइट, ये सिर्फ कंपनी साइड से नहीं सोचता है, ये सिर्फ कंपनी साइड से ना सोच के, राइट, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता है। मतलब फॉर एग्जांपल, राइट, कभी कभी कस्टमर्स को ही नहीं पता होता है कि उनको क्या चाहिए, राइट? तो according to the customer background, right, CPQ will suggest us to what to sell to the customer at what price, right? उसे हम लोग CPQ बोलते हैं, राइट? इसे बहुत अलग अलग मॉड्यूल्स में हम लोग सीखने वाले हैं, राइट? सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया अबाउट द CPQ। ओके, नाउ आफ्टर CPQ, राइट, CPQ क्या है ये theoretically समझ के लेते हैं, right? What is exactly CPQ? CPQ is a powerful sales tool that helps businesses to automate and streamline the sales process, configure the complex product offerings, right? Generate accurate pricing based on the rules and the discount, right? Create a professional quotes quickly, right? तो ये इसका बेसिक फीचर्स है, राइट? ये अच्छे 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 डिजाइन टेम्पलेट्स में कोड बना के दे सकता है, राइट? कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स ऑफरिंग, जैसे मैंने कहा इंटीरियर डिजाइनर एंड ऑल, राइट, उनका प्रोडक्ट ऑफरिंग कॉम्प्लेक्स है, राइट? रिक्वायरमेंट वाइज वो चेंज भी हो रहा है, उसे भी हैंडल कर सकते हैं, राइट? जनरेट द प्राइसिंग रूल्स फॉर पर्टिकुलर यूजर और ऑफर डिस्काउंट रूल्स, राइट? Then we can automate the sales process by streamlining the sales process. Why? Because it is saving us a very effective time। Okay, so this is all about the CPQ। Now the main is ये CPQ यूज करके कंपनी का तो फायदा हो रहा है, बट व्हाई वी शुड लर्न CPQ, राइट? CPQ हमें पता है क्या है, इससे कंपनीज बहुत ज्यादा फायदा कर रही है ऑब्वियसली, बट व्हाई वी शुड लर्न CPQ क्यों लर्न करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वेरी हाई डिमांड इन इंडस्ट्री राइट नाउ, राइट? और बहुत कम कंपटीशन है CPQ में, राइट? So let me show you कि डायरेक्टली, अगर मैं PPT पे तो नहीं बताता हूँ, आई शो यू डायरेक्टली द प्रूफ, राइट, व्हाई इट इज हाई डिमांड इन मार्केट। ओके, सो एक काम करते हैं, राइट, जब भी हमें जॉब अप्लाई करना रहता है तब हम लोग नौकरी पे जाते हैं, दिस इज अ नौकरी, राइट? नाउ इफ यू गो ऑन नौकरी, राइट, एंड सर्च फॉर Salesforce CPQ developer, right, and search it, perfect, right? Open, I am randomly opening the first job, right? If you can see the competition, right, 5 openings है, 48 applicants ने apply किया हुआ है, right? 2 years to 6 years experience, right? Now
Now this is the competition guys, right? बहुत कम competition है, right? One more, right? Randomly कोई भी, right? Perfect. If you can say 68 applicants, two opening Bangalore location, right? Okay, so if you can see 6 lakhs to 16 lakhs per annum pay कर रहे हैं, right? For 3 years experience 16 lakhs का बजट लेके जा रही है कंपनी, मतलब you can see the scope, right? So actually, right, CPQ क्यों डिमांडिंग है? क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल्स की कमतरता है, राइट? मतलब बहुत कम प्रोफेशनल्स है अभी सीपीक्यू में, राइट? इंडस्ट्रीज आर एक्चुअली यूजिंग सीपीक्यू, राइट? सेल्सफोर्स, अगर कोई कंपनी अगर सेल्सफोर्स इंप्लीमेंट करती है, सेल्स क्लाउड इंप्लीमेंट करती है, तो ऑफकोर्स वो सेल्स क्लाउड के हाईएस्ट पोटेंशियल पे ऑपरेट करना चाहेंगी। और हाईएस्ट पोटेंशियल कब ऑपरेट होगा? जब हम सेल्स क्लाउड का हर एक एड ऑन यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, राइट? तो एक्चुअली, राइट, Salesforce CPQ is using it, it is one of the best add-on or best product of the Salesforce, right? और उसी के वजह से companies are implementing the CPQ. Okay, perfect, right? सबको टाइम बचाना है, right? एंड टाइम से पैसा कमाना है, इसीलिए CPQ कंपनीज इंप्लीमेंट कर रही है। और CPQ इंप्लीमेंट होने के बाद सभी कंपनीज, राइट, CPQ डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट रख रही है मार्केट में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, इट इज हाई डिमांड इन मार्केट, राइट? नेक्स्ट इज perfect, right? High salaries and less competition. As I told you, right? High salaries, right? Let me just show you high salaries, right? एक काम करते हैं, just search for Salesforce CPQ developer salary, right? Randomly, I am Google searching the term, right? पहला रिजल्ट क्या बताता है? द एवरेज सैलरी ऑफ सेल्सफोर्स सीपीक्यू डेवलपर इन इंडिया इज 12,37,000, राइट? 910 per annum. Okay, perfect. Here, if you can see, Salesforce developer salary in India ranges in between 3.5 lakhs to 22 lakhs, right? One year of 1 year of experience to 8 years of experience, obviously, right? 22 lakhs hai, right? Perfect. You can search here also. The estimated salary for Salesforce CPQ developer is 11 lakh 96,250 per year, right? ह्यूज सैलरीज है, बहुत ज्यादा सैलरीज है, राइट? व्हाई? बिकॉज दिस इज अ नीश प्रोफाइल, बहुत नीश प्रोफाइल है। बहुत कम लोग, मतलब एक्सपीरियंस लोगों को भी सीपीक्यू नहीं आता है, राइट? व्हाई? बिकॉज ये जो सीपीक्यू है, राइट, ये सीपीक्यू हम लोग जनरली सीखते नहीं है, राइट? देर आर वेरी लेस रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द सीपीक्यू ऑल्सो। ओके, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज it is an integrated part of the Salesforce ecosystem, as we know, right? मतलब Salesforce CPQ क्या है? एक Salesforce का ही part है। Actually, there was a company called Brick Steel, एक company थी Brick Steel, right? Bricks, sorry, Steel brick, my bad, right? Steel brick CPQ, right? So steel brick CPQ is configure price quote, एक actually company थी, right? Which is actually acquired by the Salesforce, right? और उसको rebrand किया है Salesforce ने Salesforce CPQ करके, okay, right? So it is now integrated part of the Salesforce. Okay, perfect. 2016 में ही किया है इन्होंने CPQ को एक्चुअली सीपीक्यू को इंटीग्रेट या फिर सीपीक्यू क्यू को रिब्रांड किया है 2016 में। नाउ perfect. Next reason is, right, it is widely accepted by the businesses, right? Lots of companies are actually implementing CPQ, right? एक काम करते हैं, let's search about the Salesforce CPQ market share, right? So CPQ is actually a product of different companies, मतलब बहुत सारी companies का CPQ रहते हैं, right? जिसमें Oracle भी, Oracle CPQ, Salesforce CPQ, etc. So जो 100% CPQ का मार्केट है, उसमें 17.10%, right, is of Salesforce CPQ. ये तो older article है, right? Now let me just open it, right? Let me just show you, right? So how many customers are using the Salesforce CPQ 2013, right?
it is ranked one, means it is top CPQ company in Salesforce. मतलब CPQ ये जो कैटेगरी है इसमें का वो टॉप प्रोडक्ट है, राइट, विद द 17.10% मार्केट शेयर, राइट. ओके, नाउ इफ यू कैन सी, राइट, उसके पीछे जो तीन है, राइट, मतलब जैसे कनेक्ट वाइज सेल, राइट, ये 9.11, राइट, कोसेंटाइल, राइट, 8.61, Oracle CPQ 7.02, right. So these are the top competitor, right, of the Salesforce, right. तो ये कॉम्पिटिटर से वो लगभग 2x है, राइट, 9 टू द 18, लगभग 2x है, राइट, बड़ा. Okay, perfect. So this is how the CPQ is being, and this is how many CPQ projects are rolling out to the industry, right? Perfect, right? Now we can go to the next search also, right? So August, this is the article, a article hai, right? 2024 का, right? Comparing the top 6 CPQ solution provider 2024. First is on top, there is a Salesforce CPQ, right? Salesforce CPQ has nearly 21% market share according to this particular article, right? Uh, if you can see, right? These are the comparison between the CPQ, right? Let's let's talk about the market sales. Salesforce CPQ customer base is 3044. It is actually acquiring 21.46% market share, and it is the first ranked company. It is very easy to use, okay, compared to other product, okay, right. Now this is all about the four reason you should learn Salesforce CPQ. HR reason है आपने Salesforce CPQ सीखना चाहिए. First is high demanded in the industry, right? Lots of jobs are floating, right? Less competition, zero competition है nearly, right? मतलब 1:10 is nothing, right? If you compare it with other technologies or other solutions, right? It will be huge, right. Next is high salaries and less competition, right. And there were nearly 12-13 lakhs, right. मतलब आप अगर CPQ को apply कर रहे हैं, your experience is 3 to 5 years, right, then you'll get 15-16 lakhs easily, okay, integrated with Salesforce ecosystem, right, and widely adapted by the industries. Okay, perfect. Now, what are the job opportunities, right? CPQ, Salesforce CPQ सीखने के बाद आपको कौन से जॉब रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, एज आई टोल्ड यू, राइट, CPQ आप डायरेक्टली नहीं सीख सकते. यू मस्ट नो अ Salesforce development or Salesforce administration, right? So you can apply as a Salesforce developer. If you put CPQ into your resume, your weight of the resume will increase automatically, right? और आपको प्रेफरेंस मिलेगा बाकी लोगों से if you are applying as a Salesforce developer, right? Second is Salesforce CPQ consultant, right? So it is a role, right? CPQ developer और CPQ consultant, right? जो dedicatedly CPQ के लिए ही बना हुआ है. Salesforce CPQ में zero coding है. It is only configuration role, right? तो इसमें if you wanted to learn CPQ and if you don't want coding in your career, right, you should go for the CPQ, right? CPQ implementation specialist, it is these are the techno functional role, right? मतलब यहाँ पे आपको मतलब knowledge होना चाहिए बहुत ज्यादा CPQ का, right? Salesforce sorry, Salesforce business analyst also. So Salesforce business analyst also, right? If you are Salesforce business analyst and you are working with the solution, then also you can go for the Salesforce CPQ course as it add-on knowledge about Salesforce. Then for the solution architect, it is very necessary. If you are a Sales Cloud solution architect, if you wanted or if you aspire to be a Salesforce Sales Cloud solution architect, yeah, CPQ is must for you, right? And if you work in the support industry, Salesforce support engineer, right? You
you wanted to just switch to more senior role, right? You can learn CPQ. So these are the job roles, right? Which actually are important for the CPQ. Okay, perfect. They are the job roles uh, which you can apply after completion of the course Salesforce CPQ. Now, talking about the syllabus, let's talk about the Salesforce CPQ syllabus. Okay, now let me just move to the Gradix Academy's website for the syllabus, right? I'll just go and see the Salesforce CPQ course, right? This is Salesforce CPQ course, right? Now we actually divide the Salesforce CPQ into four modules, right? First of all, right, first module is introduction and Salesforce administration essential for the CPQ. Firstly, we are going to understand what is exactly Salesforce CPQ, importance of the Salesforce CPQ into a business, overview of the code to cash process, right? Understanding of the CPQ architect, right? How CPQ functionality or terminology works, right? CPQ versus standard Salesforce pricing model, right? Then some admin concept like Salesforce object model view, right? That means data models, right? Custom and standard object relationships, in relationship, lookup relationship, master data relationship, junction relationship, validation rules and formula fields, workflow and process builder and flows, right? Approval processes, then reports and dashboard for the sales team, sales cloud overview, lead and opportunity management, product and price book and codes, right? And contract order management. So these are the admin essentials and CPQ, right? Introduction, first module. The second module that we have is CPQ configuration and pricing strategy. First of all, we will be starting with installing a CPQ. I'll be providing you a free org access, right, for the CPQ. Then we will be navigating and we will be understanding what are the tabs and apps present into a CPQ. Then we will be setting up the product price book and pricing rule. We will be understanding the configuration about CPQ and user permission. Then we will be understanding about CPQ data models, what are the relationship into a standard object, right? And how that CPQ data model will work, etc., etc., right? Then we will be discussing about the bundle products and standalone product, right? Means how we can create a bundle of the product, how we can create a standalone product, single product, right? Then we will be having a product rules like validation, selection, alert rules, right? Then we will be having a product options and features, right? Then we will be learning about the dynamic bundle and nested bundle, right? Then we will be having a discussion around guidelines for the selling configuration, CPQ pricing methods like list, cost, block, and tiered pricing, right? Tier 1, Tier 2, Tier 3 pricing brackets, right? Then discount schedule, volume discount, right? Pricing rule, automating a pricing adjustment, right? Contracted pricing and special pricing scenarios, right? Uh, etc., etc. Then subscription model and all, right? These will be the second module, that is CPQ configuration and pricing strategies, right? Third is code approvals and contract management. First of all, this is very important, right? Code template and customization, designing of the code templates, right? And customization inside the code template. What is code line item and code line item editor overview, right? Then multi-dimensional coding, right? Then some grouping and sorting code lines, right? Code calculation and code line fields, right? CPQ, advanced approvals processes and approval workflows, right? Automation, automated approval and conditions, right? Then CPQ document generation, right? PDF generation, output document templates, right? This will be all about the documents that we are placing along with the CPQ or code. Okay. Then generating an order from the code, contract lifecycle management, right? Then what is contract? What is the relationship between order and contract? Then subscription management and co-termination and amendments into a code. Okay, perfect.
Next and last module is integration with real world scenarios and career support, right? First of all, right, the understanding the module is very simple, right? But real world example and use cases are very effective, right? Means we will be discussing all real world scenarios and real world use cases for each and every module. We will be integrating a CPQ with the Salesforce billing cycle. Then we will be having an integration with ERPs, then best practices, right? I'll be guiding you to end CPQ implementation. I'll be covering the debugging and troubleshooting and use case based learning about the CPQ, right? Then I'll be sharing you a question answer for the interview also, right? Then we will be having a resume building real time project, right? I'll be sharing what to add into a resume, etc., etc. Right? So this will be the fourth module. So this is how our syllabus is divided into a four module, and the duration for this course is 8 weeks. Okay. All the lectures will be live lectures, right? You will be get a recording access for the lifetime, right? And we will be having a one-on-one doubt and mentorship, personalized mentorship for everyone into a who is enrolling into a course, right? So this is the syllabus for Salesforce CPQ. And along with the syllabus, the very important thing is the preparation. GradX Academy is actually have one preparation plan for you also, right? We, along with GradX Academy Salesforce CPQ course, right, we are focusing on your placement and your syllabus. Okay. So along with the live lecture, right, we are offering you the recordings of all the lectures. मतलब जो भी lectures हो रहा है वो आपका live class हो रहा है, और उसका recording within a 24 hour GradX app पे आपको available होगा, right? You will be getting a lifetime access for that recordings. After that, on each weekend, we are having a mock interviews by experts who are working and who has a industry experience. They will ask you a question and give you interview feedback every week, right from the beginning. Okay. After this, right, we are also offering you daily assignments and real time tasks for practice. That means जो भी सिलेबस होगा वो सिलेबस पे रियल टाइम इंडस्ट्री में किस तरह के टास्क रहते हैं या फिर रियल टाइम केस स्टडीज, राइट, आई विल शेयर विथ यू, एंड अलोंग विद दैट आई विल गिव यू द होमवर्क. होमवर्क से क्या होगा, आपका जो भी कंसेप्ट आपने सीखा है वो कंसेप्ट अच्छी तरह से आपको आएगा और अच्छी तरह से आप वो ग्रास्प कर सकोगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर चाइल्डहुड. जब भी हम लोग चाइल्डहुड में मैथ्स का ट्यूशन करते थे तो मैथ्स के टीचर हमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ाते थे और उसके जैसा सिमिलर तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको होमवर्क देते थे. सेम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग हियर टू हैव यू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. Along with the practice or daily assignment and real-time task, we offering you a resume building, interview preparation, and mentorship sessions, right? अभी resume building में क्या रहता है, right? You don't know how resume is actually how to build a resume, right? And you also don't know कि resume में कौन सी चीजें mandatory है, कौन सी चीजें आप skip कर सकते हो. यू डोंट नो आपका गैप होगा या फिर आप डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट डोमेन में काम कर रहे हो, तो फिर आपका रिज्यूम कैसे होना चाहिए. एक्चुअली आजकल एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम भी बनाना पड़ता है. सो वी विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द रिज्यूम बिल्डिंग, मतलब पर्सनलाइज सबका रिज्यूम बिल्डिंग हम करवा के देंगे. प्लस वी विल बी गाइडिंग यू along with your नौकरी प्रोफाइल. We will be guiding you along with the LinkedIn profile, how to get the maximum calls, how to tackle the calls, how to tackle HR interviews, how to tackle technical interviews. I'll be giving you the question bank along with the companies, राइट, मतलब कौन से कंपनी में कौन से क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड है वो भी मैं दूंगा. मीन्स आई विल बी हेल्पिंग यू थ्रू आउट एंड टू एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन. इससे क्या होगा, यूर एक्चुअली यू विल बी हैविंग अ गाइड, मतलब आपका मॉक इंटरव्यूज हो रहा है प्लस आपको फीडबैक भी मिल रहा है, राइट. प्लस आपको जो भी कॉल आ रहा है वो कॉल अगर आपको कन्वर्ट नहीं हो रहा है मतलब आपको सिर्फ कॉल आ रहा है कंपनी से और इंटरव्यू नहीं हो रहा है स्केड्यूल, तो उस पे भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे. वी हैव द प्लेसमेंट टीम फॉर दैट,
right? And all of these things are actually you are getting on the GradX application, right? That means हम लोग मतलब आपको files वगैरह transfer नहीं करेंगे. We are having your login on our app, right? वो ऐप पे आप सभी चीजें एक्सेस कर सकते हो, राइट? अभी बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि आर यू प्रोवाइडिंग अ कॉल? यस, वी विल बी प्रोवाइडिंग अ कॉल्स टू सम पीपल्स, राइट? मतलब हर एक को हम लोग कॉल्स तो प्रोवाइड करेंगे ही, जो भी हमारे रेफरेंसेस है, हमारे इंटरनल रेफरेंसेस आपको मिलेगा ही, राइट? अलोंग विद आर इंटरनल रेफरेंस वी विल बी वर्किंग ऑन द नौकरी ऑल्सो, राइट? After this, we are providing you 100% placement assistance until you get placed. मतलब जब तक आप प्लेस नहीं होते कहीं ना कहीं, तब तक हमारा असिस्टेंस आपको रहेगा ही, राइट? अलॉन्ग विद दैट हम लोग आपको जो आपका सर्टिफिकेशन है, राइट? सर्टिफिकेशन में जो मॉक एग्जाम्स रहते हैं वो भी हम लोग आपके करवा के लेते हैं, सो दैट कि आप सर्टिफिकेशन में फेल ना हो, राइट? इसके अलावा जो भी लोग फ्रेशर है, दे आर परस्यूइंग अ सेल्सफोर्स और सेल्सफोर्स रिलेटेड टेक्नोलॉजीज फ्रॉम ग्रेडिक्स, we will be providing you guaranteed internship after successfully completion of the training from Gradix Academy. I'll be giving you 500 plus interview question banks company wise and date wise, right? We will be mentoring you throughout your career. मतलब ऐसा नहीं है, we believe in 100% lifetime relationship and guidance. मतलब आप अगर आप अभी प्लेस हो गए एंड फिर आप ग्रेडिक्स एलुमनाई हो और आपको एक साल बाद कुछ हेल्प चाहिए करियर स्विच करने में, राइट? वी आर गोइंग टू हेल्प यू देयर आल्सो, राइट? वी विल बी प्रोवाइडिंग यू ग्रेडिक्स सर्टिफिकेशन आल्सो, राइट? जो लिंक्डइन में एक्सेप्टेड है, मतलब इट इज अ क्रेडेंशियल बेस्ड सर्टिफिकेशन जो लिंक्डइन पे आप अपलोड कर सकते हो या लिंक्डइन पे वो एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट? And this is all about the GradX Academy Salesforce CPQ Masterclass, right? I hope you got what is exactly CPQ and how you can build career in CPQ. Now, coming to the most important thing, fees, right? The fees of the program is actually divided into two phases. First is the initial phase and second is the final phase. Okay. The initial fees you need to pay before training, means the fees for the training is 27,000 rupees, right? And 31,000 rupees, right? 27,000 rupees for online classes, 31,000 rupees for offline classes. This is the initial fees. And whenever each one of you get placed, means whenever आपका प्लेसमेंट होता है तब आप 1 मंथ सैलरी हमें पे करोगे. मतलब इफ यू आर गेटिंग 6 लाख रुपीज और 12 लाख रुपीज ऑफ पैकेज, आपका 1 लाख रुपए हमें मिलेंगे, राइट? सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर, राइट? वी हैव अ कंसेंट फॉर्म, राइट? वी हैव all the things written on that, right? So we will be guiding you throughout everything for the placement. जो जो चीजें required रहेंगी वो सभी चीजें आपको हम guide करेंगे, help करेंगे, because in your placement we also get benefited. Okay, now this is all about the masterclass, guys. I hope you like the session, and if you wanted to know more about CPQ or about any query around Salesforce, you can just contact on this number. This is our official number, and you can call them. And if you wanted to just talk to me, right, you can also call them. They will connect you with me. And if you have any sort of query, you can just write email to us also. Okay, now that's it. Thank you so much. We can now start with question and answer session. So for the question and answer, I'll just stop recording. Just hold on.